Hello guys, welcome back to my channel Learn and Grow with Ananya Mishra. Yes, this is a video after a very long time. So I thought why not start it with very interesting topic of class 10th, the biology section, which is life processes. Now, life processes, why they are so important. Okay, first of all, let me ask you a question that how do you differentiate that what is alive and what is not? So, say if we see a dog running or a cow chewing the grass or a man is shouting loudly, we say that this person or this animal is alive. But what if the person is sleeping? We say the person is breathing, that is why he is alive. But what about the plants? How do you say that they are alive? Now you can say कि मैम वो ग्रो करते हैं विद टाइम, उनकी लीव्स बढ़ती हैं, वो हाइट में इंक्रीज करते हैं एंड दे गिव फ्रूट्स टू अस. हम एक छोटा सा सीड डालते हैं एंड दे ग्रो इनटू अ बिगर ट्री. सो दैट वे वी कैन से दैट दीज आर अलाइव. But a plant that is not visibly growing is still alive. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ब्रीथ करते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. ओके, सो मूवमेंट्स जो होते हैं उनको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि बिकॉज द पर्सन इज मूविंग और बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ एक्शन वी कैन से दैट द पर्सन इज अलाइव. It's because of the internal processes that happen inside the body of an organism that classify that the person is alive. Now we know, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था सेल के ऊपर, कि our body is entirely made up of cell. Now these cell, they combine together to form tissue. Now several tissues combine together. Now these tissues are specialized to perform some kind of function. Okay. Now these several tissues combine together to form an organ. Now this organ, say for example, if you see on the screen, heart is specialized to perform a function called blood circulation. Now this heart forms a system which is called circulatory system. So which is involved, the circulatory system involves the lung, the arteries, the veins, the hearts, everything. So that forms a complete system, organ system. Now this organ system is a part of an organism. Now अगर ये जो पूरा आपका स्टेप है, ये इसमें से एक भी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डैमेज हो जाता है पार्ट टिश्यू या फिर आपका सेल, so that affects the whole organ system, whole organism. So if this order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Okay, so this whole maintenance function of living organism must go on even जब वो कुछ भी नहीं कर रहे हों. Even when they are sleeping, these internal functions must go on. That is the prime criteria to say that a person is alive. So this whole process of maintenance and repairing inside the body of an organism is what we call as life processes. So life processes वो सारी activities होती हैं that an organism performs to survive in the environment. तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी है कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए और हेल्दी होकर सर्वाइव कर पाए is what we call as life processes. Now there are various life processes that help an organism to survive, that are nutrition, respiration, circulation, excretion, movement, reproduction. But here in this chapter we have to learn about only 4 life processes, that are nutrition, respiration, transportation, excretion. Now if we roughly learn about
all these processes in one line because हर एक process का मैं एक separate video निकालूंगी, but यहाँ पर हम एक brief introduction ले लेते हैं. तो starting with nutrition. Now nutrition क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है. So the process by which an organism takes up food and utilizes to obtain energy to perform various functions is called nutrition. ओके. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो हमने खाना खाया तो ऑक्सीजन उसको क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब करती है और हमें एनर्जी मिलती है. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन from outside the body and use it in the process of breakdown of food resources for cellular needs is called respiration. अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि हमने खाना खा लिया, ऑक्सीजन ले लिया, पर वो हमें डिफरेंट पार्ट्स में मिलेगा कैसे? ये मिलता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की वजह से. अब वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ये जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है, बट बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि वेस्ट होती हैं, बाय प्रोडक्ट होती हैं, जो हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं होती हैं. सो द रिमूवल ऑफ दोज वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो यहाँ पर मैंने वन लाइन की डेफिनेशन दे दी है. अगर आप इसे नोट करना